శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
అర్చక స్వాములు వాళ్ళు ఎలా చెప్తారో అలాగే భక్తితో అందరూ పఠించండి, స్వామి అనుగ్రహం పొందుతాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ
అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. గోవిందా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. గోవింద గోవింద. వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణూరమர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று இன்று அந்த கிருஷ்ண பகவானை செவிக்கலாம். ஏனென்றால் அஷ்டமி திதி, சதயம் நட்சத்திரம், ஞாயிற்றுக்கிழமை, கார்த்திகை மாதம். விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. பாதாதி கேசமாக பெருமாளையும் தாயார்களையும் சேவித்து கொண்டு சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. ప్రాణప్రజా పరమ పంకజ కంభూకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్య వరదం అమృతం భజామి. భృగ్వత్రిగస్య పమరీచ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసమయే సమధీరయంతం శ్రీశాస్త్రధారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి. భువనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచ అత్రికస్యవేభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాత్యా పారిషత్యాః పరశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదరం విశ్వక్సేనం తవాశ్రయే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘనసే నమః. సూత్రాణామన్యక్లుప్తానాం నేత్రం యచ్చస్తనీకృతం सूत्रं वैघानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवता न गृहीतो भगवता न ध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा ननु मन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिरासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जक्रमणि स्तण्डिलपरिदिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्क्रमकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जक्रमणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुरप्तशुडमानशेषधरत्तरित्व परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकृष्णे गृह्णामि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा जितमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वरुणे सहस्रं यज्ञया पाशामितरा पुत्रा
तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे मुं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि हाजमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापदं शृङ्गकेतुं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोगिस्मादजामहे त्वां विश्वे सदा त्वं हि दौनशुम्भो वैराजन्ते ध्वन्यधत्तां प्रयिष्यामि देशो विबुधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुपायने नमः सूत्रवत्यै नमः दिगायै नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्युज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदा सदस्य प्रियं सत् द्रविणोदा वीरवते मिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विस्तृणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यदत्राः स्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे सदा जिक्कन्तोः अतिथिर्द्योरतिथिरन्तरिक्षमतिधर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्यशं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्करूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमथोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हमेशा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम सरितः समीराः पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरनाय चक्षसे योपश्यपदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितीर्म मातरः तस्मारङ्गमावमो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रमदे पवित्रेण पराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात्
यस्ये भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य दमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरगीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् द्वादः प्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हर्तावनी जिज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पावमानी दध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि स्तुतिदं मातरिश्वरा पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरकं सत्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहि गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शिन्नो अस्तुद्वने सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान् दिशि देवार्पजो मार्जयन्तान् दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तान् प्रतीत्यान् दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यान् दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्ताम् अतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्फुटिर्वणानागं सोमः पवित्र मत्ये तिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனை மற்ற கைங்கரியங்களை செவித்தோம். இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். கிருஷ்ண பகவானை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய வீர தீர செயல்களை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடையலாம். அதேபோல் பூத்தனா மோட்சம், அதாவது பூத்தனைக்கு மோட்சத்தை எப்படி கொடுத்தான் என்று பார்க்கும் பொழுது உழலை என்பது பேச்சு முலையோடு அவளை உயிருண்டான் என்று நம்மாழ்வார் பாடியபடி விஷப்பாலை கொடுத்து கண்ணனை அழிக்க வந்த பூத்தனையின் விஷப்பாலோடு சேர்த்து அவளது உயிரையும் பூண்டு பூத்தனையை வதைத்தான் கண்ணன். இந்த லீலை நமக்கு உணர்த்தும் தத்துவம் என்னவென்றால், கண்ணபிரான் அஷ்டம கர்ப்பத்திலே தேவகி வசுதேவருக்கு மைந்தனாக பிறந்தவன். அந்த அஷ்டம கர்ப்பத்திலே பிறந்தாலும் கூட அவனால் தனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து என்று கம்சன் மற்ற குழந்தைகளையும் கொன்று இவனையும் கொல்ல எண்ணுகிறான். ஆனால் விதிவசத்தால் மாயை என்னும் குழந்தைக்கு பிறகு கண்ணன் பிறந்தான் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை. அதனால்தான் அவன் ஆயர்பாடியிலே யசோதா நந்தகோபனுக்கு மகனாக வளர்ந்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணனை இன்னும் உயிர் பிழைத்திருக்கிறான் என்று நினைத்து தெரிந்து கொண்டு அவனை பலவிதங்களில் ஹிம்சைப்படுத்தி, அதாவது அவனை உயிரெடுக்கும்படி அவனை சம்ஹாரம் செய்ய எண்ணினான் கம்சன். அதன் பலனாகத்தான் பூத்தனையை முதலில் அனுப்புகிறான். அவனுடைய அந்த சின்ன குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை புகட்டி அவனை சம்ஹாரம் செய்ய வேண்டும் என்று. பூத்தனை என்பவள்தான் அவித்யை எனப்படும் அறியாமை. நம்முடைய கர்ம வினைகளின் விளைவாக வந்த அந்த அறியாமை நம் ஞானத்தை மழுங்க செய்து பிறவி
இப்பணியில் நம்மை அழுத்துகிறது. அவளது 2 மார்பகங்கள் தான் நான் என்னும் அகங்காரமும் எனது என்ற மமகாரமும் இருக்கிறது. அப்படி அதிலிருந்து வெளிவர வழி என்றால் கண்ணனின் திருவடிகளை நாம் சரணடைய வேண்டும் என்றும் அவன் பூத்தனையின் 2 மார்பகங்களையும் உறிஞ்சியது போல் நம்முடைய அகங்கார மமகாரங்களை முழுமையாக உறிஞ்சி எடுத்து அந்த பூத்தனையை அழித்தது போல் நம்முடைய அறியாமையையும் அழித்து நமக்கு பேரின்ப வாழ்வாகிய முக்தியை அருள்வான். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜை. ओम भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणि प्रतिशरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये. वां यमर्पयन्ते मनयो हविर्यो जोहितानर्वविधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्नं विपिनानि वदन्तु. ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्या चन्द्रमथा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामे महि स्वस्य यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यं प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्न अस्ति शुभागुं शुभाम्. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. அப்படி அந்த பூத்தனையின் மார்பகங்களை உறிஞ்சி அவளுக்கு அகங்கார மம்காரத்தை அழித்தது போல் நமக்கும் அந்த எம்பெருமான் அருளிச் செய்வான். அடுத்தது 2வதாக சகடாசுர வதம். கம்சனால் ஏவப்பட்ட சகடாசுரன் என்னும் அசுரன் மாட்டு வண்டி சக்கர வடிவிலே வந்து தொட்டிலில் கிடக்கும் கண்ணன் மேல் பாய்ந்து கண்ணனை அழிக்க திட்டமிடுகிறான். ஆனால் பொன்ற சகடம் உடைத்தாய் என்று ஆண்டாள் பாடியபடி தன்னுடைய திருவடிகளால் உதைத்து அந்த சகட்டாசுரனை சம்ஹாரம் செய்தான் கண்ணன். இது உணர்த்தும் தத்துவம் என்னவென்றால், தேகி என்றும் பாகிமாம் பாகிமாம் எங்களை ரட்சிப்பாயாக என்று அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்தோமானால் அவன் நம்மை தக்க சமயத்திலே ரட்சிப்பான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரிய வேளையிலே சகட்டாசுர வதம் எப்படி செய்தான் கிருஷ்ணபிரான் என்று பார்க்கும் பொழுது, சகட்டாசுரனின் வடிவமான மாட்டு வண்டி சக்கரம் என்பது நமக்கு வாழ்க்கை சக்கரமாக குறிக்கிறது. சக்கரம் சுழல்வது போல் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் என்று இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் நாம் உழல்கிறோம். கண்ணனின் திருவடிகளை நாம் சரணடைந்தால் அந்த சக்கரத்தை உடைத்து நொறுக்கியது போல் நம்முடைய பிறவி சூழ்ச்சியாகிய சக்கரத்தையும் உடைத்து நமக்கு பேரின்ப வாழ்வினை அளிப்பவன் அந்த பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து திருணாவர்த்தாசுர சம்ஹாரம். இவை அனைத்தும் கூட அந்த கம்சனால் ஏவப்பட்டவர்கள்தான் இவர்கள் எல்லோருமே. யசோதை கண்ணனை தன் மடியில் வைத்துக்கொண்டு வீட்டின் திண்ணையிலே அமர்ந்திருந்த பொழுது
திடீரென வந்த புயல் காற்று கண்ணனை தூக்கிச் சென்று விட்டது. அந்த புயல் தான் கம்சனால் ஏவப்பட்ட திருநாவர்த்தசுரன் என்னும் அசுரன். ஆனால் கண்ணனோ தனது எடையை அதிகரித்து கொண்டே போகவே விழி பிதுங்கி ரத்தம் கக்கி பூமியில் விழுந்து மாண்டான் அந்த அசுரன். நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் ரஜோகுணம் தான் இந்த திருநாவர்த்தசூரன். அதிகமான கோபம் காமம் கொண்டு செயல்படுவதை ரஜோகுணம் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படி திருநாவர்த்தசூரனை கண்ணனையே தூக்கி சென்றது போல அந்த அவனுடைய அகங்காரத்தையும் ரஜோகுணத்தால் ஏற்படும் காமமும் கோபமும் நம் பக்தியை நம் குணங்களையும் நம்மிடமிருந்து ஒரு நொடியில் அபகரித்து சென்றுவிடும். கண்ணனின் திருவடிகளை நாம் பற்றினால் திருநாவர்த்தசூரனை அழித்தார் போல ரஜோகுணத்தை அழித்து நம் மனதில் தூய பக்தி வளரும்படி அருள் புரிவான் அந்த கண்ணபிரான். அப்படி கண்ணபிரான் அவதாரம் எடுத்தவன் திருமலையிலே திருமலை அப்பனாக பெருமாளாக வேங்கட பெருமாளாக எழுந்தருளி இருக்கிறார். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது காப்பு கட்டுதல் என்னும் ரக்ஷாபந்தனம். நாச்சிமார்களுக்காக அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எதனால் என்றால், ஒரு கைங்கரியமோ அல்லது காரியமோ செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனதினை அலைபாய விடாமல் சமயத்திலே அதற்கான காரியங்களையும் கர்மங்களையும் செய்து அதை அனுபவித்த பிறகுதான் பலன் தெரியும். அப்படி இதோ நாச்சிமார்கள் இருவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று அந்த தாயார்கள் இருவரையும் செவிக்கலாம். பகவான் எந்த அவதாரத்தில் வந்தாலும் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு உடனடியாக தங்களுடைய நாமத்தையும் செயல்களையும் தன்னுடைய உருவத்தையே மாற்றிக்கொள்ளுபவர்கள் இந்த பிராட்டிமார்கள். அப்படி அந்த பிராட்டிமார்களுக்காக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இரு நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் அந்த ரக்ஷைகளுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தாயாருக்கு. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிகள் இருவருமே கூட சமான தகுதியை பெற்றவர்கள். பகவானின் வக்ஷஸ்தலத்திலே குடிகொண்டவர்கள். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆக இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவமானது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். இதோ அர்ச்சக சுவாமி கூட தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியம் செய்ய உள்ளார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். அடுத்து ரக்ஷையை கரத்திலே அணிந்து கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்திற்கு செல்ல உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். ஸ்ரீமதிலாண்டகோட்டி ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धः पिरोतिमिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्यशों यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रुद्रान् दाशुरे शुद्धो वर्त्राणि जिग्नशे शुद्धो वाजं शुधासति
मयि देवाद्रविणमाजनन्तां मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारामणयन्तपूर्वे ममयान हव्याकोति सत्यापन सोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामि देवीश्वरमीर्णकृणोत विश्वे देवास यहमीर्यत्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजहसिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थाद्रिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदाजिक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदीको घृतयो निदेहे घृतं पीत्वा मधुचारकव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतसृजो वेन आपः समुद्रया पपमा अस्य विष्टासतस्य यो नवसतस्य विवः ॐ भूं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्त्रवणं योधरात् तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्ने इदमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं इदमानं च धीः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्ने इदमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं इदमानं च धीः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तोमैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनधा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशस्य पवित्रे स्तोमैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण मधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्नेपो अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं नयदाग्ने यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि गिरवाणवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्ने इदमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं इदमानं च धीः ओम प्रणय सोमापप्रणीष्यामि गिरवाणवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्ने इदमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं इदमानं च धीः ओम प्रणय कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकुं सातयन्तरः इदं वदन्ति एतकथपट्टावदाकसहस्रभूषं चिदमानेन्यच्छतेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्तिनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगेरिष्टनवभामि ब्रह्मणेरिष्टनवभामि इन्द्रागिरिष्टनवभामि अग्नयेरिष्टनवभामि सोमागिरिष्टनवभामि अग्नयेरिष्टनवभामि सोमागिरिष्टनवभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनवभामि प्रजापतिगेरिष्टनवभामि ब्रह्मणेरिष्टनवभामि इन्द्रागिरिष्टनवभामि वसुभ्योरिष्टनवभामि मरुद्भ्योरिष्टनवभामि रुद्रेभ्योरिष्टनवभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेरिष्टनवभामि बृहस्पतिगेरिष्टनवभामि मित्रागिरिष्टनवभामि वरुणागिरिष्टनवभामि आदित्येभ्योरिष्टनवभामि हस्तिभ्यानिष्टनवभामि पूष्णेरिष्टनवभामि कक्षागिरिष्टनवभामि कक्षदेवतसोमागिरिष्टनवभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनवभामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टनवभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनवभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योदर्शे समिधि स्वाहा अमृतमसि मारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्तदिस्थापनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पदिस्थापनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तानपदापनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त्वेगा च शतञ्च सहस्रं चायुतं च निहितं च प्रगितं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्निहितमक्षयमर्पतमानय
అయంత యుద్మ ఆత్మాజాత వేదస్తే నేత్యస్వవర్తస్వజేత వృత్తగిరాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవత్యసేనాన్నాద్యేన సమేధాయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్వభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వముక్స్తాః నవదేన్వముక్స్తాః సరస్వతేన్వముక్స్తాః దేవతపిత ప్రాతామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సగపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షర క్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశక్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతపిత ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోకర్మాణి పశ్యతగదో వృదాని పస్పశే ఇంద్రశ్చ సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమేవ చక్షుణాదరగ స్వాహా తద్విప్రాసో విపణ్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదక స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వముక్స్తాః నమదేన్వముక్స్తాః సరస్వతేన్వముక్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామీః మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు
పై దానవు ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనితని ఉరము ఎక్కితివి గదవే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేనెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం ఉపకల్పమానం ఉపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభాని జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వాన్నాదభగ్స్తపన్నభితపన్నే రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః ముష్కయోరథదాత్సవం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సవః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాకూతిం రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తామరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధువతే గంధవత్యలకావతే యశోవదేత్యష్టరేమ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తి వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమరిబాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పితధిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పద్మీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష హారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసదిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతమున్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భక్వాదిభిర్వసిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త కుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలామాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః
परब्रह्मणोन्नप्त्रे आङ्गीरसमानहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमण आप्नवान अपूर्ववेदलपञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं हयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासुजातायां श्रीदेवीनाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीम् इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकनिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुधीलाय सुमेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ஏ வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்ய பூஜை என்பது ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் ஒவ்வொரு கல்யாண உற்சவத்திலும் அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்து அதன் பின் பகவானுடைய அனுமதியை பெற்று மாங்கல்ய தாரணம் செய்வார்கள். அதே போல்தான் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு இப்பொழுது பூஜை நடைபெற உள்ளது. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலையப்பன் தசாவதாரங்களிலே இரண்டாவது அவதாரம், அதாவது ராமபிரான் அவதாரம். கிருத்த திரேத துவாபர கலியுக என்று 4 யுகங்களிலே ராமாவதாரத்தை பற்றி சற்று பார்க்கும் பொழுது மிகவும் விசேஷமான பலன்களை அளிப்பவன். புனர்வசு நட்சத்திரம், சித்திரை மாதம், நவமி திதியன்று அந்த ராமபிரான் அவதரித்தான். கண்ண பரமாத்மா அஷ்டமியிலே அவதரித்தால் ராமபிரான் நவமியிலே அவதரித்தார். எம்பிரான் நரசிம்மன் வைகாசி மாதம் ரோகிணி சுவாதி நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தான். இப்படி தசாவதாரங்களையும் அவர்கள் அவதரித்த சமயத்தையும் பலரும் நாம் தெரிந்திருக்கிறோம். ஆனால் குலமலை கோலமலை என்றெல்லாம் பெரியாழ்வார் வர்ணிக்கின்ற திருமாலிருஞ்சோலை என்னும் அழகர் கோவிலில் அருள் பாலிக்கின்ற சுந்தர ராஜனாகிய அழகர் எப்பொழுது அவதரித்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆடி மாதம் உத்திராட நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தாராம் அழகர். அதனாலேயே அவருக்கு ஆடி மாதத்தில் இங்கு நடைபெறுகின்ற பிரம்மோற்சவத்திற்கு அவதார மகோத்சவம் என்று பெயரும் உண்டாம். மிக சிறப்பு வாய்ந்த கோவில்களில் திருமால் தலங்களில் திருமாலிருஞ்சோலை என்னும் அழகர் கோவிலும் உண்டு. அதேபோல் பூம்புகாரிலும் மதுரைக்கு அருகே அந்த
கடல் தாழ் வயலோடு தன் பூங்காவொடு கடம்பல கிடந்த காடுடன் கழிந்து சுழிந்து திருமால் குன்றத்து என்று கூறும் அடிகள் தொடர்ந்த அந்த மலையையும் அதிலே பெருகும் சிலம்பாறு என்றும் வைகைக்கும் இப்படி கூறப்படுகிறது. அந்த அழகர் எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்க்கும் பொழுது சுந்தர தோளுடையான் என்ற ஆண்டாள் நாச்சியரால் புகழ்பெற்ற எம்பெருமானின் தேர் திருவிழா கோலாகலத்திலே அந்த பகவானுக்கு சந்தனக்குட வைபவமும் ஒன்று தமக்கு மட்டும் அல்ல தம்மை சேர்ந்த அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருமாறு முழுமையாக ஆனந்தம் என்பதை அழகர் கோவிலின் ஆடி அவதார மகோத்சவம் நடைபெறுகிறது. இப்படி அந்த பகவான் தசாவதாரங்களிலே கிருஷ்ணனாக அவதரித்து நமக்கு மிகவும் சிறப்பான அவருடைய செய்கைகளை நமக்கு உணர்த்தியவன். வெண்ணையை திருடிய லீலையை பார்க்கும் பொழுது நம் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளுகிறது. பானை நம் அந்த உடலை குறிக்கிறது. உடலாகிய பானையிலிருந்த உள்ளமாகிய வெண்ணையை கண்ணன் திருடும் அழகை திருப்பாண ஆழ்வார் இவ்விதமாக விவரிக்கிறார். கொண்டல் வண்ணனை கோவலனாய் வெண்ணெய் உண்ட வாயன் என் உள்ளம் கவர்ந்தானே அண்டர்கோன் அணி அரங்கன் என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என்று பாடுகிறார். அன்று ஆயர்பாடியில் கண்ணனாக அவதரித்து வெண்ணெய் திருடியவன் இன்று அரங்கனாக திருவரங்கத்திலே பழி கொண்டிருக்கிறான். அங்கே ஆயர்பாடியில் பானை இருந்தது, வெண்ணெய் காணவில்லை. இங்கே அரங்கத்திலே என் உடல் இருக்கிறது, உள்ளத்தை காணவில்லை என்றால் ஏனெனில் பானையிலிருந்து வெண்ணெயை திருடினார் போல் என் உடலில் இருந்து உள்ளத்தை இந்த அரங்கன் கொள்ளை கொண்டு விட்டான் என்று இந்த பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார். வெண்ணெயைப் போல வெண்மையான தூய மனதுடன் வாழும் அன்பர்களின் மனங்களை கவர்ந்து செல்லும் உள்ளம் கவர் கள்வனாக கண்ணனாக விளங்குவதாக இதன் மூலம் நாம் தெரிவிக்கின்றோம். ஆனால் வெண்ணையோ நம் உடலோ மனமோ உயிரோ இவை அனைத்துமே அவனது சொத்துதானே. அவன் சொத்தை அவன் எடுத்துக்கொள்ளுவதை ஏன் திருட்டு என்று சொல்ல வேண்டும்? வெண்ணெயை திருடியதாலோ மோர் பாலை திருடியதாலோ நம் உள்ளங்களையும் மனங்களையும் ஆத்மாக்களையும் திருடியதாலோ அவனை திருடன் என்று குறிப்பிடுவதில்லை. வேறு எதை திருடினான் என்று கண்ணன் வாதிராஜர் விடை கூறுகிறார். ஸ்வபக்த புஞ்சார்ஜிதம் பாபவிருந்தம் திவானிசம் சோகரதி சம்பாலா என்று. கண்ணன் வெண்ணெயை திருடிய கதையை யாரெல்லாம் கேட்கின்றார்களோ அவர்களின் பாபங்களை எல்லாம் கண்ணன் திருடிச் சென்று விடுகிறான். நாம் செய்த பாபங்கள் அனைத்துமே நம் சொத்துதானே. நம் சொத்தாகிய பாபங்களை அவன் திருடிச் செல்வதால் தான் அவனை திருடன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலே வாதிராஜர் கூறுகிறார். அடுத்தது இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை. அந்த ருக்மிணி பிராட்டியை எப்படி திருமணம் செய்தார் என்று பார்க்கலாம். பீஷ்மக ராஜாவின் மகளான ருக்மிணி கண்ணனையே மணந்து கொள்ள விரும்பினாள். ஆனால் அவளது 5 உடன் பிற இந்த சகோதரர்களான ருக்மி, ருக்மரதன், ருக்மகேசன், ருக்மபாகு, ருக்மமாலி ஆகியோர் அவளை சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்ய திட்டமிட்டார்கள். சிசுபாலனுக்கு மணமுடித்த நினைக்கும் பொழுது அப்பொழுது ருக்மிணி ஒரு பிராமணரிடம் தன்னுடைய காதலை பற்றி கடிதம் எழுதி அதை துவாரகையில் இருக்கும் கண்ணனிடம் சேர்க்கும்படி கொடுக்கிறாள். அவரும் அந்த கடிதத்தை கண்ணனிடம் சேர்த்தவாறே கண்ணன் வந்து அவளது சகோதரர்களை வீழ்த்தி ருக்மிணியை மணந்து கொண்டாராம். இதில் தான் ருக்மிணி ஜீவாத்மா, கண்ணபிரான் பரமாத்மா. சிசுபாலன் உலகியல் வாழ்வு ஜீவாத்மாவுக்கு உடன் பிறந்தவர்களாகிய 5 பேர்கள். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிப்போம் மாங்கல்ய தாரணத்தை.
లక్ష్మీ రమణ గోవింద ధరారమణ గోవింద. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. సుప్రతిష్ఠితమస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిని గగనమునందు పొదలిన యారని
भिः अहेणमानोपरणे हवोदृशकं समानाय प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्नेवरणस्य विद्वान् देवस्य हेणो मयासतिष्ठाः यजिष्ठो बह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागंसि प्रममतिह्यस्मत् स्वाहा सत्पन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अस्यापचतो व्यष्टौ अवयक्ष्मणोवरणकं ददानो वेहमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमुहिते जानो देहिभिः षट् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसवितप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनाकुम्रसेनोत्पज्जन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वाभूतत्वया वयं धाराभूतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभून्यासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रागिच्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाक्रमाकं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसवितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभा यदस्य कर्मणोच्यतेरजं यत्वान्योन्यमहाकरम् अग्निश्चस्पृष्टकृत्वान् सर्वग्स्पृष्टकं धृतङ्करोति स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते धोतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भवदग्निस्तत्वनराहार्जातवेदापितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुधातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्वरायं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रिज्ञै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिधसितेजोषिते जोमयिधे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्नि समिध सप्तदिक्पा सप्तर्षि सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्द्र सप्तयोनिनापनत्वा सुनेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो ममनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वार्थश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं देवोर्जैनं पृथिवी जैनं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जैनं समन्ताम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितर्पितामहः प्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्ममुक्स्ताः अनुमदेन्ममुक्स्ताः सरस्वतेन्ममुक्स्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षेतामसि वरिष्ठाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधेन् त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजे एकवर्धमत्र मेधां वष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसे दक्षिणतो विष्णोः सदनमसे उत्तरतो विष्णोः सदनमसे प्राच्यां विष्णोः सदनमसे सर्वानन्यान् परसमूक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरय स्वाहा भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् महेरणाय तिक्षसे योमश्वतमोरसस्तस्य भारयते हनः उचितेरव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय दिन्वधः आपो जनयधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासना यकृन्दमयादेव परिपूर्णं तस्ते प्रायश्चित्तान्यशेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింದ லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சன மிடுதல் பூர்ணாகூத்தியை செவித்துக்கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே அந்த
வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை நாம் இப்பொழுது சேவிக்கலாம். நாச்சியார் திருமொழியிலே 141 பாசுரங்களிலிருந்து 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை கூறுகிறாள். அதிலே அந்த பந்தல்கள் எல்லாம் மிகவும் நேர்த்தியாக அமைக்கப்பட்டன. துர்காதேவி தனக்கு கூரை புடவை எடுத்து கொடுத்தாள். அருந்தத்தியை பார்த்து தனக்கு அந்த கண்ணன் மெட்டியை அணிவித்தான். இப்படி வரிசையாக ஒவ்வொரு கைங்கரியத்தையும் தான் கனவில் கண்டதாக கூறி அந்த பாசனங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி முடிக்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலைகளை மாற்றுவது மாலா பரிவர்த்தனம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டி அவர்களுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கவும், பகவானுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் படலமே இந்த மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலை அப்பன் திருக்கழுத்திலே இருந்த மாலையானது இரு தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது வரிசையாக. முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியனுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது வேங்கடவனுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அந்த மாலையானது அவருடைய தோள்களை அலங்கரிக்கும் பொழுது எங்கள் பெருமாள்தான் மிகவும் சிறந்தவர் என்று பக்தர்கள் கூறுவார்களாம். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுடைய அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கும் பொழுது அந்த பூமி பிராட்டியானவள் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அவதரித்ததால் எங்கள் மகாலட்சுமி தான் மிகவும் உயர்ந்தவள் என்று கூறுவார்களாம். இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் இணையாக பேசி அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்தார். அந்த மாலையை கொண்டு சென்று தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எம்பெருமானுக்கு சாத்துகிறார்கள். எம்பெருமானுக்கு சாத்தும் பொழுது மீண்டும் சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கூறுவார்களாம். அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். இப்படியாக தினந்தோறும் நடைபெறும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் தினந்தோறும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவ கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் செய்கிறார். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.